Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the series of lecture on structural dynamics. This course is being taught at master's level, postgraduate level across Pakistan. And if you're doing masters in structural engineering, then this course is a compulsory course. This is a sort of introductory course of structural dynamics, because structural dynamics course is very vast and very deep concepts are there in structural dynamics, but this course is sort of introduction to the world of dynamics. So in this lecture I will be covering in the introduction of the subject what exactly you should be expecting in this particular course. Alright, so most of the content that I would be following would be from these two textbooks. One is the Structural Dynamics by Mario Paz. This you can consider as a textbook, and this is the title page of this particular book, Structural Dynamics Theory and Computation. This is the 6th edition. The PDF version and the hardbound version are easily available. PDF is available online, hardbound are available in the bookstore as well. And then this is the second book, and that in fact this book is the book that I would be following most of the time, the Anil K. Chopra book, Dynamics of Structure by Anil K. Chopra. And the title of this book looks like this. I have the 4th edition, so I am following mostly the 4th edition. I think there is a 5th edition as well of this particular book, but I have the 5th and 4th edition, so I am following the 4th edition only. And then there are a lot of books on this particular subject, so you can study as many books as possible for your understanding, right? So this Clough and Panzin book is one of the very popular reference book on this particular subject. So I do have this PDF of this book as well. So if you search on Google, then you can find all these books as well. There are so many other books as well. There is one book written by Anderson. It's also written in a very simple way, but this Clough and Panzin book is a bit difficult book. So if for the introductory student, for those students who are just entering in the understanding of this dynamic of structure, I would recommend them to study the Mario Paz book and the Anil K. Chopra book only, because they are written in a very simple way and they are very easy to understand way. But as far as this Clough and Panzin book is concerned, this is a bit difficult, truly speaking. I think this book can be understood by the students who have already studied the structural dynamic, who have already the concept of earthquake engineering. And because in different universities are offering Master of Engineering in earthquake engineering as well. For that, in fact, you can study as many books as possible, because there is no limit to the knowledge. There is no limit to gain of the knowledge. The more you get, the better you would be, the better you would feel. Right. So the content that I would be covering in this series of lecture would be dynamic equilibrium of structure. We will be studying first about the equilibrium and then the dynamic equilibrium, because there is a static equilibrium, then there is a dynamic equilibrium. So I would be discussing the both. So my in fact plan of delivery of this course is that I should start with the very simple concept. But definitely I cannot recap. I cannot include all of the basic concept of the structural engineering or even of the structural dynamics in this course. But the thing that would be necessary for you to go along with me, come along with me, right? So that I would be including all those inshallah topics. Though sometime you may find that you already know certain concept, but definitely I'm preparing these lectures for a broader audience, for all of the students, those who are very good at structure, those who are not very good at structure. So I would be including some basic concept as well in this series of lecture. Then after being introduced with the dynamic equilibrium of the structure, inshallah we'll be studying the response of a single degree of freedom system to dynamic excitation. So that would be the most important and the most lengthy part of our course. Response of single degree of freedom system. We'll be studying the degree of freedom, because all those concepts, that new thing or new terminologies that you are watching and that you are listening right now, I would be inshallah explaining those in these lectures. So degree of freedom, don't worry about anything. If you don't know the concept of any of the terminologies, just let me know. And if I have not included that in my lecture, just let me know. Inshallah, I will include in my discussion in the coming lecture. Right. So we'll be including this. So considering the single degree of freedom system to dynamic excitation. So there are different type of dynamic excitations. So I would
That can be free vibration, because if there is no excitation, then that would be free vibration. So free vibration does not include any sort of external dynamic excitation. It only includes the initial condition, it can only include the initial displacement or the initial velocity for the oscillation to occur. And then harmonic load. So about 2 to 3 lecture would be, I think, would be spent on this free vibration. Then inshallah from 5th or 6th lecture would be including the harmonic load, because these two loads are the basic foundation sort of things for the structural dynamics. If you get through these two topics, the free vibration and the harmonic load, I am very much sure then the tempo that a student need for the understanding of the structural dynamic, I am very much sure that you would achieve that particular tempo, and it would be easier for you to understand the further complicated concepts of the response spectra of different the complicated concept of the earthquake engineering. So these two, I would be requesting all of you to do concentrate on lectures of free vibration and harmonic loading, and then inshallah when you have understood these two concepts comprehensively, then I can ensure you that the lectures ahead, the concepts ahead, that though they would sound even difficult to you, inshallah would be a lot easier for you to understand. Right, and then we'll be studying the pulses and earthquake, the different sort of pulses. They are from rectangular pulse, the triangular pulse, half pulse, full pulse. So there are different type of pulses as well. And then we'll continue our discussion to the earthquake excitations, of what exactly earthquake excitation can look like, and how exactly we can include, in our discussion, in our understanding to the earthquake excitation to the structures. And then when we have studied all these excitation, then we'll try to discuss this response spectra, because this is very important terminology, very important concept, that is sort of fundamental concept in the understanding of the earthquake engineering. And then when we have studied the single degree of freedom system, then we'll just, इसको जिसे कहते हैं ना कि हम गुजरते हुए चले जाएंगे रिस्पॉन्स ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के ऊपर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट व्हेन यू इंक्लूड द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ऑफ अ स्ट्रक्चर. सो वी वुड बी इंशाल्लाह डिस्कसिंग not in detail, but definitely to that extent where your confidence level will be such that you would be able to continue your this thirst of structural dynamics to the multi degree of freedom system as well. And then lastly, there would be seismic behavior of buildings on the basis of the seismic building code. We do have the Pakistan building code as well, and there are definitely other building code, uniform building code. So all those codes will be inshallah just discussing all those things as well regarding the seismic behavior of the buildings. So these are the 5 major topics that would be covering in the series of lecture. I expect there would be around 15 or 16 lectures on these topics. So these are all basic concept of the structural dynamics. So if you want to continue your learning on the subject of structural dynamics, then you will have to take the courses of earthquake engineering and further advanced courses of the structural dynamics. So do expect that this particular course is a fundamental sort of course, introductory sort of course. So that's why I've included all these topics. So these are the topics that are mostly being covered at the master level structural dynamic course of the Pakistani universities, so, and some of the universities across the world as well. And particularly those books of the Mario Paz and the Anil K. Chopra book are the books that are being taught all around the world. They are so comprehensive book. Every bit of, I must say, that of structural dynamics is being included in those 2 books. So what you should expect after completion, after watching all those lectures, right? So you would be able to identify and define key concepts related to structural dynamics, such as the natural frequencies, the mode shape, the damping, the vibration characteristic of a structure. So after watching these lectures, inshallah, you would be able to identify, you would be able to define the key concepts related to the structural dynamics. And then most importantly, you would be able to recognize the physical phenomena in the context of the structural engineering, right? Of the structural vibration. Then you will be able to formulate the equation of motion for dynamic analysis of structure. You would be able to demonstrate an understanding the assumptions and limitation of the structural dynamics theories.
and then you will be able to solve engineering problem in the context of structural dynamics. So as you can see, so these are very good expectation, and I believe that if you watch all those lecture, I'm very much sure that all these expectations would be inshallah met, and then you will be able to do all those things. You will be able to recognize, you will be able to identify and define the key concept, you will be able to formulate the equation of motion, then you will be able to even solve those equation of motion that would be deriving for different sort of excitation, different sort of structural behavior. So these are the key expectations that I'm hoping that you would be able to achieve after the completion of this series of the lecture. So let's talk about the background of the subject, what exactly this subject is all about, because when you are just jumping into a sort of subject, then there should be a certain knowledge of that particular subject, that what exactly you would be expecting, what sort of content you would be expecting. So contrary to the static forces that civil engineers encounter in their undergraduate studies, because whatever we have studied in the undergraduate level, we have studied very little on the dynamics. I think only in the one course of the static there is a single part of the dynamic. When you were studying the engineering mechanics course, so there is a static part and there is a dynamic part. So I think that is the only exposure of the dynamic. And sometime I think when we were studying the mechanics of solid course, we were taught the moving load as well. So there is very little on the dynamics part. Most of the undergraduate civil engineering is concerned to the static forces. So as far as this subject is concerned, we will also see the dynamic forces around us. As you see that there are wind, you can see there are moving vehicles, and then sometime you see the bomb blasts, there are all the dynamic forces. And in Pakistan, most of the Pakistani regions are the earthquake region, and we do listen that earthquake has occurred sometime in Islamabad, sometime in Balochistan, sometime in different part of Balochistan and Kashmir as well. So the dynamic forces are around us, so we'll have to consider those dynamic forces. You cannot disregard the dynamic forces. So this particular course is all concerned about the dynamic forces. Effect of these dynamic forces on structure need to be explored and understood as well. कि इनके जो असरात हैं, that we need to understand that as well कि किस तरीके से आती हैं, because we have studied the statics, but how exactly the dynamic forces would affect our structure around us, whether we are sitting in a house, whether you are sitting in a classroom in a university, in your hospitals, in any building around us. If any of the any of the dynamic force occur, so what would be the behavior or structure to that particular dynamic force? So this course, structural dynamics, will cover your thirst of knowledge in this area. So if you have any curiosity regarding these sort of forces, regarding the behavior of the structure to these sort of forces, so if you have any thirst in this area, so I'm very much sure that this particular course, with this particular series of lecture, will cover your this thirst. So dynamics deal with the accelerated motion of a body. So that is the crux of this background. So whenever you hear a word dynamics, so the thing that should strike in your mind is that this is the accelerated motion of a body. Whether it's a dynamic force, whether it's an oscillating body, there would be acceleration involved in that oscillating body, in that accelerated motion would be there in that particular body. So there is a little comparison between the dynamic and the static analysis. So structure analysis is basically concerned with the finding out the behavior of physical structure when subjected to a force. So mostly if you are doing the static analysis, if you are doing the dynamic analysis, so both the things cover the structure analysis, because structure analysis means the inclusion of the static as well as the dynamic. So structure analysis is mainly concerned with finding out the behavior of a physical structure when subjected to a force. जब भी कोई फोर्स लगती है तो हम जो उसका एनालिसिस करते हैं वो स्ट्रक्चर एनालिसिस में करते हैं. अब दिस फोर्स कैन बी अ स्टैटिक फोर्स, दिस फोर्स कैन बी अ डायनामिक फोर्स. ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स इज एन एजेंट. वी हैव, आपने मेरे ख्याल में 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आए, और फिर हमने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा, हमने एफएससी के अंदर भी पढ़ा कि फोर्स क्या चीज़ है. तो जो फोर्स का थोड़ा सा मैंने एक ग्लिम्स दी है कि फोर्स क्या होता है. जैसे हमने डेफिनेशन एक रटी हुई है कि फोर्स इज एन एजेंट विच स्टॉप्स or tend to stop, which move or tend to move. So in this particular first animation, a person is trying to move an aeroplane, so it means he is applying a force. And then force is an agent which moves
So this person is trying to move this heavy block. If he's not moving, he is at least trying to move. And in this particular Spider-Man clip, this particular Spider-Man is trying to stop the whole train, and then finally he does stop. So in all these three cases, whoever is doing that thing, a force is being applied, whether to stop that particular body or to move that particular body. So application of force is there. So this is how force should, you can feel the force. ठीक है. अब डायनेमिक क्या हो सकता है? तो डायनेमिक में आप देखते हैं कि पीपल हैं, तो ये सारे के सारे लोड हैं. अगर एक ब्रिज के ऊपर, एक स्टेडियम के अंदर लोग आके बैठे हुए हैं, तो वो लोग क्या है, क्या वो लोग एक एक तादाद में थे? कोई लोग आ रहे हैं, कोई लोग जा रहे हैं, कुछ लोग उठ रहे हैं, कुछ लोग बैठ रहे हैं. ठीक है, तो ये लोड है. अभी तक मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऑल दीज आर थिंग्स द लोड. अब इस लोड में किसको हम स्टैटिक के अंदर कंसीडर कर सकते हैं और किसको हम डायनेमिक के अंदर कर सकते हैं, तो ये भी हम देखते हैं. फर्नीचर है घर के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर आपके फर्नीचर पड़ा हुआ है, लोड है. ठीक है, विंड आई हुई है, तो ये लोड है आपके पास. ठीक है जी, कि हवा चल रही है. स्नोफॉल हुआ है, स्नोफॉल हुआ 1-2 घंटे के लिए हुआ, उसके बाद धूप निकल गई, पिघल गई, लोड चला गया. तो लोड की जो इंटेंसिटी थी वो आपके पास वेरी करती रही. ठीक है. एंड देन अर्थक्वेक, तो हम सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक इज़ अ डायनेमिक लोड. ये अर्थक्वेक का जो वर्ड है वो सुन के हमारी जो क्यूरोसिटी, एक सिविल इंजीनियर की क्यूरोसिटी होती है स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स की, वो अर्थक्वेक का ये जो फोर्स का नाम है, यही हमें इस अर्थ स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स की तरफ लेकर आता है. एंड देन अनफॉर्चुनेटली लिविंग इन पाकिस्तान वी हेयर दिस ब्लास्ट टर्म वेरी मच कि भाई फलानी जगह पे धमाका हो गया, फलानी जगह पे धमाका हो गया, इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग इंतकाल कर गए. तो ये जो ब्लास्ट है, ये भी ज़ाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि ये भी एक डायनेमिक लोड है. इसके कैसे इफेक्ट आते हैं आप देखते हैं, शीशे टूट रहे हैं, आप देखते हैं मस्जिद की पूरी मस्जिदें गिर गई हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं. तो ये जो जिसमें अगर आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे लोड्स हैं, इसमें कुछ लोड कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टैटिक, ऑल ऑफ देम कैन बी कंसिडर्ड डायनेमिक एज वेल. क्योंकि अगर आप पीपल की बात कर रहे हैं तो पहले आप देखते हैं कि कम लोग आए हुए थे, फिर ज़्यादा लोग आ गए, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग बैठ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं. तो जो इंटेंसिटी या द नेचर ऑफ द लोड है दैट इज़ वेरिंग. तो ये जो मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ वो उस डायनेमिक टर्म की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ कि डायनेमिक लोड किस वजह से उस लोड को हम डायनेमिक कहने लग जाते हैं. ठीक है, तो वो हम आगे वाली स्लाइड में देंगे. अब फर्नीचर है, फर्नीचर कभी आपके कम बेड में, आपके बेडरूम में एक ही बेड पड़ा हुआ था, फिर आपने ला के ड्रेसिंग टेबल भी रख ली, फिर आपने कहा ओ नहीं 1-1.5 महीने बाद कहा कि भाई अलमारी भी नहीं थी, तो आपने ला के अलमारी भी रख दी. तो इवन डेड लोड जो है, ये सारे के सारे डेड लोड कहलाते हैं. इवन ये जो लोड है, इसकी इंटेंसिटी और लोकेशन भी चेंज हो जाती है. कभी आप सेटिंग चेंज करके यहाँ रख देते हैं, कभी आप चेंज करके वहाँ रख देते हैं. तो ये जो इवन डेड लोड भी है, इनकी भी इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है. ठीक है, तो इसी तरीके से विंड लोड तो है ही डायनेमिक, कभी चल रही है, कभी दाएं से चल रही है, कभी बाएं से चल रही है, कभी नॉर्थ से, कभी ईस्ट से, कभी वेस्ट से. तो जिस डिफरेंट डायरेक्शन से लग रही है, कभी तेज़ चल रही है, कभी स्लो चल रही है. तो विंड लोड तो है ही डायनेमिक लोड. स्नो के बारे में मैंने बता दिया. तो एनी लोड कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टैटिक, कैन बी कंसिडर्ड एज अ डायनेमिक. ठीक है, लेकिन नॉट नेसेसरली दैट अर्थक्वेक यू कैन नॉट कंसिडर अर्थक्वेक टू बी एज अ स्टैटिक फोर्स. ब्लास्ट यू कैन नॉट कंसिडर ब्लास्ट टू बी अ स्टैटिक फोर्स. ठीक है, लेकिन एज फार एज जिस तरह नॉर्मली आपने अंडरग्रेड के अंदर पढ़ा है कि जो आपने डेड लोड का देखा है, अगर कोई लोड फर्नीचर का लोड है तो उसको मोस्टली डेड लोड कंसिडर किया जाता है. पीपल का जो लोड है उसको आप कहते हैं, बाज़-औक़ात कहते हैं डेड लोड है कि भाई 5 बंदों ने ही रहना है. लेकिन ज़ाहिर है कि सारे के सारे लोड की इंटेंसिटी, तो जो डायनेमिक का तायुन है वो इस चीज़ पर है कि क्या वो लोड अपनी इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, क्या वो लोड अपनी लोकेशन वेरी कर रहा है. तो अगर ये दोनों चीज़ें टाइम डिपेंडेंट है, उसकी इंटेंसिटी और उसकी लोकेशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टाइम. क्या आपने देखा कि आप पलक झपकने में लोड इधर से उधर चला गया, तो इसका मतलब ये दिस इज़ टाइम डिपेंडेंट. तो अगर वेरिएशन इज़ टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, तो फिर वो दैट लोड शुड बी कंसिडर्ड एज अ डायनेमिक लोड. ठीक. So in essence all these loads are dynamic including the self weight of the structure because at some point in time these loads are not there. जो self weight of the structure होता है, जैसे आपने फाउंडेशन कास्ट की, फिर उसके ऊपर कॉलम रेस किए, उसके ऊपर आपने बीमें डाली, स्लैब डाला, तो लोड जो है वो ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे फाउंडेशन के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है. जैसे पहले कॉलम का लोड था, उसके ऊपर बीम का लोड आ गया, उसके ऊपर स्लैब का लोड आ गया. ठीक है, फिर उसके ऊपर आपने दीवारें चुन दी, फिर उसके ऊपर दरवाजे खिड़कियाँ लगा दी. तो इवन जो डेड लोड है, कहने का मकसद वो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जो डेड लोड भी है वो भी एट सम पॉइंट जो है स्ट्रक्चर के अंदर ये डेड लोड भी ये डायनेमिक इन नेचर होता है.
ठीक है. So the distinction is made between the dynamic and static analysis on the basis of whether the applied action has enough acceleration in comparison to the structure natural frequency. अब ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई जो स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में हम आगे चल के डिटेल में इंशाल्लाह ये कोर्स में पढ़ेंगे और इसके कंसेप्ट आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि फिर आप इंशाल्लाह लोगों को सिखाने जा रहे होंगे. तो बात ये है कि जो अप्लाइड एक्शन है, ठीक है, कोई भी एक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसके अंदर इनफ एक्सेलरेशन है. ठीक है. एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन यू आर नॉट सेइंग दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन. तो अगर इनफ एक्सेलरेशन है, उसके अंदर की वेलोसिटी विद टाइम वेरी करती है, तो फिर उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है. तो अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो फिर यू वुड से कि भाई जो एनालिसिस है दैट वुड बी डायनेमिक एनालिसिस. और अगर उसके अंदर जैसे आपने मैकेनिक के अंदर पढ़ा ना, तो वहाँ डायनेमिक्स पढ़ा, तो वहाँ आपने डायनेमिक एनालिसिस उस सेंस में पढ़ा कि जहाँ आपकी जो वेलोसिटी थी वो यूनिफॉर्म थी. ठीक है. तो फिर आप क्या कहते हैं कि फिर वो उसको जो एनालिसिस होगा वो स्टैटिक एनालिसिस होगी अगर उसका इनफ एक्सेलरेशन उसके अंदर नहीं है. So if a load is applied sufficiently slowly, the inertia force is Newton's second law of motion can be ignored. अगर बहुत slow apply हुआ है तो Newton's second law can be ignored and the analysis can be simplified as a static analysis. ठीक है. तो ये static में है, ये हमने ऐसी just for fun एक पिक्चर दिखा दी है कि एक साहब जो हैं वो घर के साहब हैं, वो सोफे पे पड़े हुए हैं, हाथ में सिगरेट लगाई हुई है. तो ये स्टेटिक सॉर्ट ऑफ पर्सन. ऑन दी कंट्री अगर आप ये घर के खातून खाना को देखती हैं तो वो दौड़े चले जा रही हैं, कभी झाड़ू लगा रही है, कभी जना से बर्तन धो रही हैं और कभी कपड़े धो रही हैं. तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. सो नॉट शी सीम्स टू बी इन अ डायनेमिक कंडीशन. ऑन द कंट्री टू अस वी मेल वी यूजली जो है हम कभी बेड के ऊपर पड़े हुए हैं और कभी जना से कुर्सियों पे पड़े हुए हैं, सोफे पे पड़े हुए हैं, टीवी लगा के बैठे हुए हैं. तो ये थोड़ा सा ह्यूमर के लिए भी दिखाया कि स्टैटिक डायनेमिक में जो अगर एक्सेलरेटेड मोशन आपको नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका जो एनालिसिस होगा दैट शुड बी टेकन एज अ डायनेमिक एनालिसिस. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. ये एक इंट्रोडक्टरी मैंने आपको दिया था ताकि आपका एक वो बने. इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायनेमिक इन्वायरमेंट को देखेंगे कि आप जब स्ट्रक्चर डायनेमिक्स में आपका ये आग समझ में आ गई कि डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है और आप अपना कदम स्ट्रक्चर डायनेमिक्स के सब्जेक्ट में रखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वहाँ आपको इन्वायरमेंट माहौल किस किस्म का मिल रहा है. तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वुड बी डायनेमिक इन्वायरमेंट. सो थैंक यू.